If we have met before, you must have accompanied me on several tiger safaris. This time, let me take you to a beautiful evergreen forest in the Kedarnath Wildlife Sanctuary in search of the most beautiful pheasants, which is also the state bird of Uttarakhand and the national bird of Nepal. We spent about 4 days near Chopta and used to trek to Tungnath temple almost every day to get one good image of the monal. One thing you should understand about coming to Tungnath for shooting the monal is रेडी हो के आना, इन लाइन पे चलना पड़ेगा और बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा क्योंकि मोनाल कभी जाएगा ऊपर कभी जाएगा नीचे और हो तो सकता है उड़ पर तुम्हें पड़ेगा चलना. The photograph was in my mind since the last 1 year. I wanted a portrait of the monal in the rhododendron flowers. We tried waiting on the mountains, behind the rocks, in the snow, and what's not. Was I able to capture the image I had thought of? Come, let's find out together. Meet the Himalayan monal. They are native to the Himalayan forests and shrublands and are usually found at elevations of somewhere around 2100 to 4500 meters. One of the best places to photograph the monal is Tungnath, which happens to be the highest Panch Kedar temple in Uttarakhand. Now, this temple attracts innumerable tourists every summer, but a handful of people know that this place is profoundly rich in wildlife too. It's a home to more than 2,000 species of birds and animals. During our trip, we stayed in Mandal in a cozy little homestay by Ranaji, who is a great host but a better cook. Now, if you happen to meet him in Mandal, ask him to cook some dosa for you and thank me later. Good morning. This is our day 1 in Chopta and right now we are in Mandal heading towards Chopta, which is about a 40 minutes drive from here. It's a little late in the day, so the plan is to not start the trek today and do it tomorrow. So let's see how it goes. While you are on your way to Chopta, there is a place called the Monal Point, where monals keep on coming up and down the road. We stopped there for a while and within a few hours, we saw my first monal. So pretty. Close up चाहिए, close up. करना पड़ेगा फिर. और नॉर्मली मोनाल्स का बिहेवियर क्या होता है? कॉलोनी में रहता है, कैसे रहते हैं? नहीं, दो तीन रहता है इकट्ठे. 2-3 फीमेल्स, एक मेल. हाँ, एक मेल या 2 मेल ऐसा रहता है. मोनाल्स में भी टेरिटरी फाइट होती है? हाँ, होती है ना. मेल्स में. हाँ. So it's around 4:30 and we are all set to leave. अभी जा रहे हैं हम for the trek at Tungnath और कुछ 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है और आइडिया ये है कि अर्ली मॉर्निंग लाइट में मोनाल को शूट किया जाए क्योंकि मोनाल के जो कलर्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग लाइट में बहुत सुंदर लगते हैं. 4 घंटे की नींद मिली है, हालत ख़राब है, पर देखते हैं क्या होता है. now this morning was all about long periods of wait and wait. अरे वो तो बहुत पास पहुंच गया मोनाल के. And finally, there was this one moment when I was extremely close to getting the image I wanted. While waiting for the monal to come down, which later it did not, we came across this cute little pika mouse. Meet the Himalayan hare or the pika mouse. They are usually seen on the open rocky mountain edges in the Tungnath area, and like every other animal and bird, habitat loss is one threat towards their existence.
कैच ऑफ द डे वॉज अ पीका माउस। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, कुछ ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर लंच वगैरह खाएंगे, कल वाले ढाबे पर बढ़िया वाली कॉफ़ी पियेंगे और फिर से उसके बाद शाम को टाइम होगा मनाल के मूवमेंट का, उसी के लिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे बिकॉज अभी तक जो शॉट चाहिए वो नहीं मिला है। तो मनाल शूट करने के लिए मम्मी खुराना साथ आई हैं। मम्मा, एनी सजेशन दैट यू वुड वांट टू गिव टू मम्मी फोटोग्राफर्स who want to come to shoot Manali? Yes. What is that? What is that? मम्मी का बस एक काम है, आलू पूरी नाश्ता लेके आओ, शूट बच्चे करते रहेंगे और जब क्लाइंब करो आपका कैमरा कहाँ है? तो खाली पेट करो। मैंने भी शूट किया लेकिन मैंने सब कुछ मोबाइल से किया। तो आपका कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा गाड़ी में है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को लेके आती या कैमरे को लेके आती। मनाल देखी आपने? हाँ, मैंने मनाल देखी। आपकी लाइफ की पहली मनाल आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर बर्ड है, बहुत सुंदर बर्ड है। इतनी मेहनत करके यहाँ आना। मेल दोनों देखा, बहुत सुंदर। सो दिस वॉज अ तुंगनाथ ट्रैक एंड पूरा ऊपर मंदिर तक हम नहीं गए आज। हमारा पर्पस ये था कि हमने मनाल शूट करने थे। मनाल हमको इस एरिया में काफ़ी सारे मिल गए थे पर यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है और उम्मीद मत कीजिएगा कि जब लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आप मनाल शूट कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू शूट द मनाल देन दैट्स द अर्ली मॉर्निंग इज़ द टाइम। शुरू का 1 घंटा टाइम है मनाल शूट करने का और उसके बाद फिर बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। देन देयर इज़ नो पॉइंट कमिंग एंड शूटिंग, इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट बिकॉज इतना शोर रहता है ऊपर नीचे कि बर्ड्स ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। Now, if you come to Chopta, mark this dhaba and do not forget to try the coffee they serve. This is a great place to wait for the evenings because during the afternoon, morals aren't that active. But things didn't go as per the plan. In wildlife, they hardly do. And suddenly it started snowing. We are still waiting for the Manal to come, but the Manal had to hide somewhere because snow में बहुत ज़्यादा और rain में बहुत ज़्यादा birds जो हैं वो active नहीं होते हैं. We'll wait here for some more time for the Manal to come. So it's time to go back. We waited here for 3 hours sitting in the same place. पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मनाल क्रॉस करने वाला था लास्ट मोमेंट पे कुछ बाइक्स आ गई, सारी मेहनत पानी में गई बिकॉज मनाल पीछे की साइड से क्रॉस कर गया। पर मॉर्निंग में यहीं आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्रॉसिंग रहती है मनाल्स की। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, लाइट परफेक्ट हो, मोमेंट परफेक्ट हो, गियर परफेक्ट हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एट द लास्ट मोमेंट, अ कपल ऑफ मिनट्स बैक समथिंग हैपन्स एंड एवरीथिंग गोज इनटू द ड्रेन्स। बी रेडी फॉर दैट। Next morning, we decided to be a little ahead of these little pheasants. So we planned to start our day by 4:30. Little did we know that an early morning cardio was waiting for us. Did I say too much little? Now, how did this day go? Were we able to reach in time for the Manal crossing? Did I get the shot I wanted? Were there any more struggles? Come back for part 2 and find out.